Hi, so this is end of 8th of July and this is a follow-up analysis for BHEL, and the initial video was posted yesterday. You will find it in the upper right hand corner. The reason I'm going to do this video is trying to ascertain and trying to make people understand of why and how to trade, and when you should be taking out the so I'm going to tell you how I trade breakout, right? So let's jump into it, and ये वीडियो में हम लोग यही समझेंगे कि अगर मैं ये ट्रेड लेता हूँ तो मैं किस तरह से लेता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप वो वीडियो कल की देखोगे तो उसमें मैं कहा था कि अगर ये कंसोलिडेट करेगी जितनी इस रीजन में. अच्छा, कल का यहाँ तक एक क्लोजिंग आई थी 68 लेवल्स पे, एंड दिस वाज अ वेरी गुड ब्रेकआउट जोन, राइट. सो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग जोन था. यहाँ पे आके फिर नीचे से बाइंग आई और फिर अल्टीमेटली दिस वाज अ रेजिस्टेंस जोन विच इज़ राउंड अबाउट एट 68.15 68.2. उसके पहले हम लोग थोड़ा सा एक छोटी सी ड्राइंग कर लेते हैं. दिस वाज द अर्लियर ब्रेकआउट. नाउ सो लेट्स, ऑफ कोर्स आफ्टर मार्केट आवर्स देख के कोई भी कुछ बोल सकता है. सो वी आर ट्राइंग टू एसर्टेन एंड वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड of how to trade a breakout, right? This is the main concept which I'm going to show over here. So let's draw some beautiful lines. So kal ka ye tha, so this was yesterday, and then it closed over here, and it's the next candle. You see this red one, this is from today, right? So कल हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन थी कि ये 68 रीजन के वेरी क्लोज हुई है. एंड अर्लियर whenever a breakout came, this breakout came with volume, right? ये जो कैंडल है इसकी आप वॉल्यूम देख सकते हो. सो दिस गिव्स यू सम कॉन्फिडेंस. एंड 68 क्यों में ये रेजिस्टेंस आई, दैट कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ. सो यू कैन हैव अ लुक ओवर देयर. सो आज सुबह में ये यहाँ से फिर ब्रेकआउट दी, राइट. एंड नाउ इफ़ यू सी देयर आर सम टेल साइंस, मतलब कुछ अच्छी एक कुछ चीज़ें जो सटीक नहीं थी. दिस इज़ गुड. फर्स्ट 15 मिनट्स में रिवर्स की, नेक्स्ट में बहुत एक बुलिश ये आके वो 68 रीजन में आ गई, ठीक है. बट यू सी दिस इज़ not a good sign that you have not a very good volume. So basically the first criteria you should have in any breakout is you should have a good volume. See, at least this candle, this one, so that at least had some volume, right? And this candle from where it reversed from 68.6 in the first 15 minutes, that also had volume. So when you have a move precedented with volume, then it actually gives that okay, there are a lot of buyers and sellers. Of course it doesn't matter because a trade is एक भी कुछ भी ट्रेड के लिए एक बायर चाहिए, एक सेलर चाहिए. So what it says is there are a lot of buyers and eventually there are a lot of sellers, right? So every trade के लिए equivalent number of buyers और sellers चाहिए. लेकिन ये जो ब्रेकआउट आई अबव 68 रीजन, दिस इटसेल्फ वाज वेरी not a very strong breakout, right? But many a times it can happen that this sort of breakout happens. And the first thing which I try to do is I try to see a volume. ऐसे breakouts मेरे radar में at least 250 से 300 times per day आती है in every trading session. So that's not something new that I have to jump in every one of them, राइट. लेकिन ये एक फर्स्ट क्राइटेरिया होती है मेरी कि वॉल्यूम देखना. और अगर मैं वॉल्यूम देख के अगर मैं उतना इंटरेस्ट नहीं हुआ, देन आई वुड लुक फॉर अ फॉलो अप. तो इसका फॉलो अप में जो हुआ, सो यू कैन सी देयर वाज अ सेलिंग, right? At the top there is a wick, and okay, so this wick can happen. So the next thing which you as a breakout trader should try to understand is breakout किस रीजन से हुई थी. ये 68.10 रीजन से हुई थी. so यहाँ पे जब आई, यहाँ पे आके वो लगातार 3 कैंडल कंसोलिडेट कर रही है, एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो वॉल्यूम. सो टिल नाउ अभी भी अगर आप ट्रेड में हो, दिस इज परफेक्टली वेरी गुड सेटअप, राइट? क्योंकि
ठीक है, आपको ब्रेकआउट लगा, आपने ट्रेड लिया, और दिस इज़ हाउ, बिकॉज दिस इज़ हाउ द मार्केट वर्क्स, दिस इज़ हाउ ट्रेडिंग वर्क्स, यू विल बी राइट एंड यू विल बी रॉन्ग। आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि अगर मैं रॉन्ग हूँ तो मैं जल्दी से जल्दी एक फॉल्स ब्रेकआउट से निकल जाऊँ, एंड नॉट टू स्टे इन दैट ट्रेड एंड कंपाउंड योर लॉसेज। और ये भी आप कर सकते हो कि अगर आप ऑलरेडी ट्रेड लिए हो, से ऑप्शंस में लिए हो, देन first of all, if you are in options trading, always try to hedge yourself. I have never seen anyone who has not hedged himself, either through futures or through cash buying, has been able to make it big. जो भी आप अगर, if you are in the right direction and if you are in the right trade, normally you would make a very small percentage and you would have a very good day. और ये मैं, I have talked to hundreds of retailers, right? So it's not it's the same thing. और जब आपका लॉस होता है तब आप उसी में रहते हो कि ये सोच के कि अभी शायद ये बढ़ेगा और मुझे अपना रेट मिलेगा, right? So don't try to do that. Always be hedged. So once you are hedged, then of course, just like when this sort of breakout happens, right? So normally if you have a huge amount of money, say for example, then you can sell this PE of 68, and you can then buy a PE of 66.5, say for example, or 66, jo bhi hai. So in this way you are hedged, so even if you go wrong, your losses are very much constrained. और अगर आप राइट हो तब तो आप राइट हो, सो यू आर गोइंग टू गेन. सो नो मैटर वॉट, दिस इज गुड. सो अब तक ये 11:30 तक सब सही थी. Now the problem came is this was a breakout zone and this is the problem. It gave a breakdown, right? जब भी ऐसे situations आती है, first of all you should as a trader always try to put a stop loss somewhere over just below, एंड डिपेंडिंग अपॉन द वोलेटिलिटी ऑफ द स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट किस तरह से मूव करती है. आप एक पॉइंट पे आप बोलोगे कि इट डजेंट मैटर इवन इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन मैं अपने लॉसेस इसके ऊपर मैं सस्टेन नहीं करूँगा. और व्हाट यू कैन डू इज़, if you are trading this, say for example you are targeting 70 as your target, and if this touchdown happens say at 67.8 or 67.6 levels, the first thing you should, and you have an option, say you have few lots or one lot of a 68 CE, the first thing you should do over here is definitely go and sell the 70 CE if you have not already sold it. So in this way you are hedged, and even if it actually reverses and it goes high, you will not be losing much, because if it reverses then the 68 CE will be coming in your, or will be in the money, and so it will be more advantageous for you from an option concept, and option जिस तरह से behave करती है. और फिर ये जो रीजन आई, दिस वॉज नॉट गुड, विच मीन्स दैट इट्स अ वेरी चांस ऑफ अ फॉल्स ब्रेकआउट. एंड नाउ यू नो इट केम एंड इट टुक दिस पर्टिकुलर कैंडल, जब वो ब्रेकआउट जोन जो 68 थी उसको टेस्ट कर रही है, ठीक है ना. दिस इज़ द परफेक्ट टाइम वेयर आई एक्चुअली क्लोज माई ऑल द शॉट्स, क्योंकि अगर ये सचमुच एक ब्रेकआउट होनी है, always do remember this very concept. If you are trying to chase momentum, if you are trying to chase a particular if you are trying to be a momentum trader, a breakout trader, the first thing you have to be is you have to be ruthless, and you have to have a very strict stop losses, depending upon theoretically I have index in which I mention, I track of how many failed breakouts happened every day, and that index gives me the sentiment of the market in general. And of course this has been bad. I have discussed this few times in my earlier videos. So basically अगर आप कोई भी breakout trade लेते हो, उसके chances अभी फिलहाल after say May, chances are very high that it will lead to a failed breakout. So you should always have this. अगर ये स्क्रिप्ट में अगर सचमुच बाइंग इंटरेस्ट रहती, so why would it not be able to sustain? See, first of all is it came and it made a low of 60. Let's see, let me clean this up. ये ट्रायंगल के ये कैंडल की हम लोग बात कर रहे हैं. सो यू कैन सी द लो इज 67.95. दिस इज गुड. गो अहेड एंड पुट 67.8 67.9 एज योर स्टॉप लॉस. अगर वो टच हो गई तो हो गई, मतलब इट डजेंट मैटर, यू हैव टू सेव योर कैपिटल.
And this is exactly what happened, because once this gets touched, even if you are not taking any positions and not squaring off your losses, the market will do. Just like अगर मैं इस ट्रेड में होता, मैं बुक कर लेता. तो if people with this sentiment is are booking out, then of course there will be a huge selling pressure, right? और यहाँ पे कोई buy भी नहीं करेगा, even if I am very interested in this stock. And this has happened repeatedly in previous instances. One of the instance which I remember very vividly और बहुत अच्छे से याद है, वो है Jubilant Food. Jubilant Food gave an all time high, and then there was a very bad failed breakout. सो नो मैटर वॉट, अगर आप इसमें अगर आप स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर नहीं होता है, सो देन इट रिवर्स्ड एंड देन 68. दिस इज एग्जैक्टली द region where even if you are not booking out your losses, the market will book out your losses, because 68 was a zone of a breakout. The breakout happened, it failed, and now again it's trying to retest 68. So this is the second instance जहाँ पे आपको अपनी ट्रेड स्क्वायर ऑफ करनी है या आपको अपने hedge positions बनानी है. If you have bought at say 68 CE way over here, then over here you would be in a loss definitely. You can try to be in profit by selling some far out of the money call, which you think is the level which won't be attained very quick in the next 2-3 sessions. So इस भेल की अगर आप टारगेट्स देखो 70 and 74, where the targets 74 is a medium term, so you can go ahead and sell 74 call options, and in this way at least some part of the money would always be with you. क्योंकि अभी अगर भेल goes in a very tight consolidation between 66.5 and 68, still you would be not losing out much, क्योंकि आपकी 74 की जो कॉल है वो ज़्यादा जल्दी से उसकी जो प्रीमियम है वो डिके करेगी. So no matter what, this is the second instance where you should have booked your losses, and the third or rather hedged yourself and take a contra view. The third instance is this one. So अगर आप देखो ये एक ब्रेकआउट आई, यहाँ पे ये कंसोलिडेट की, फिर फेल करके यहाँ पे आके सपोर्ट मिला उसको, एंड दिस सपोर्ट केम विथ एब्सोल्युटली नो वॉल्यूम. सो इस सपोर्ट की कोई मतलब ही नहीं है. And then it tried to go and test the previous resistance, and then it will, why should it come back, right? अगर यहाँ पे अगर serious buyers अगर हैं, first of all they should not be able to manipulate the volume. This is the first thing. Always remember, volume बहुत सारी चीज़ें बोलती हैं जो आपकी बहुत सारे indicators नहीं बोलती हैं. You don't have to look into so many indicators. Just keep this simple. And there is I have been asked to make a psychological trading video. So मेरे पास chart analysis is more important, but just to give you a small hint and small psychology, always think at any point of time यहाँ पे जो buyers हैं वो कौन हैं, और ये जो buyers हैं ये price को ऊपर लेके जा सकती है कि नहीं. क्योंकि अगर ये नहीं ले जा सकती, then obviously the price is again at the mercy of short sellers and traders and big clients if they want to book out, right? तो यहाँ पे ये जो रिवर्सल आई, दैट एब्सोल्युटली केम विथ नो वॉल्यूम. यू कैन सी दिस वाज बिलो द एवरेज, and then it tried to test 68, and immediately you can see in the next 15 minutes this formed a bearish candle. So these are very basic candlestick patterns, right? So ये जो next candle है, यही आपको आपके traders को information दे देती है कि ये bearish है, and people can actually short all this with their strength over here and keep a stop loss maybe over here. ये रीजन में. सो यहाँ पे अगर आप बुक नहीं करते हो अपने लॉसेस या यू डोंट टेक, सो व्हाट हैपेंस इज आफ्टर दिस ग्रीन कैंडल देन दिस पर्टिकुलर डोजी केम इन. So not doji, but it's a bearish. So what happened is there was a dip and then the buying came, and then at the end of it you have a bearish candle. So this pattern, and this was inside the body, which means it's a bearish setup, no matter how you see it. So many a times traders will take this as a negative, and the third candle and in the very next candle they may wait for the closing of the candle, and then in the very next candle they will try to enter the trade, because of course this has already been a failed breakout. So that actually gives a lot of confidence to short sellers, and this is exactly what happened. Now you have to understand from a psychological perspective, जो यहाँ पे जो बाई किए हैं उनमें तो वॉल्यूम भी नहीं है, मतलब ये कोई रिटेलर ही होगा,
जो छोटे छोटे ऐसे बाई किए हैं, एंड सेकेंड ऑफ ऑल ये ऊपर से जाके अभी जब करेक्ट करके फिर यहाँ आएगी, सो वाई वुड दे बी बाइंग अगेन? बिकॉज फर्स्ट टाइम अगर प्राइस आती है, एंड इफ देर इज़ अ बाई विच वी आर गोइंग टू डिस्कस अ लिटिल बिट लेटर, थोड़े से इसके 2 मिनट बाद ही हम लोग डिस्कस करेंगे. सो इफ देर इज अ सीरियस बाइंग, then theoretically it should be able to come with first of all volume, and second of all it should never retest those values, right? क्योंकि जो बायर्स घुसे हैं दे वोंट लेट द प्राइस गो बिलो इट. बट ये यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस डेफिनेटली होना चाहिए. अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हो, सो बेसिकली ट्रेडिंग इज़ नॉट योर कप ऑफ टी, आई एम सॉरी, एंड यू शुड ट्राई टू फर्स्ट लर्न trading, and you should then, or maybe you know all these concepts but you are not able to handle the emotion. So जो भी है, and this is not how trading happens. यहाँ पे मल्टीपल रेड साइंस थे और मल्टीपल जगह से आपको इशारे मिल रहे थे कि दिस ट्रेड इज गोइंग टू फेल, एंड यू हैव टू either book your losses and move out of the trade, or you have to hedge yourself if you are naked option buyer, and you have to sell something. You have to sell something, right? And this is exactly this region of 67.5. यहाँ पे आप देख सकते हो इसको इनिशियल इस लेवल्स पे उसको एक बाइंग इंटरेस्ट जो आई थी दैट केम विथ वॉल्यूम, राइट? अभी इस लेवल पे आके इसको इस तरफ वॉल्यूम नहीं मिली दिस इंस्टेंस. सो यू नो मैटर व्हाट यू हैव टू कीप अ 67.5 एज योर फाइनल स्टॉप लॉस, अगर आप अब तक ट्रेड में हो और आप कुछ नहीं किए हो एक्सेप्ट बाइंग अ लॉन्ग पोजिशन. और यहाँ पे एग्जैक्टली वही हुआ ये जब 67.5 ब्रेक की. सो लेट्स सी 5 मिनट, लेट्स सी अ 1 मिनट चार्ट. अगर कुछ एग्जैक्टली सो आप इस तरफ यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो गैप डाउन्स आती है इसका मतलब ये है कि you know people are squaring off their positions and they are not willing to trade and keep their positions. और फिर आप इस लेवल पे देख सकते हो this level will definitely be one of the levels where most of the people would actually book out of their trades, and even if you have not, and hence you can see यहाँ पे जितनी भी volumes है, this was the first candle over here, this red one, which was because of this, and this was a very solid candle. There was no reversal, so theoretically over here you should be out of the trade no matter what happens. So जो भी है, अगर आप ट्रेड में हो, so then it went and then it actually took a support at 66.5, and this was the previous support of the last breakout which happened. और ये इट्स वेरी गुड इंटरिम सपोर्ट, और ये सपोर्ट 66.5 के बारे में मैं अपने प्रीवियस वीडियो में भी बोला हूँ. ट्राई टू गो एंड हैव अ लुक. And so right now it's again it got a support and then it got some buying at least, and then it went towards 67.5. देखिए ये जो support था, now this has started acting like a resistance, right? And then towards the end, of course, the sentiment of the Nifty was bad no matter what, and there was a slight difference and change in price. So going forward, इसका अभी एक ही मतलब होता है कि the failed this breakout which was given today is a failed breakout definitely, and there is no doubt about it. Going forward, you can see that you should be waiting for डेफिनेटली अगर 66.5 लेवल्स, ये जो उसकी इनिशियल रेजिस्टेंस थी, अगर ये ब्रेकआउट होती है, देन इट्स अ सीवियर डैमेज्ड ब्रेकआउट ऑफ दिस रीजन, एंड थियोरेटिकली दिस कैन देन go towards 65 levels over here. But no matter what, I have to wait till the end of the day. Data जो अभी मेरे पास नहीं है, अभी 8 बज रहे हैं, बट टिल 8 बजे तक जो डेटा है मेरे पास, उसमें अभी तक भेल में कोई ऐसी ट्रेंडिंग पोजीशन बनी नहीं है, either on the long side or on the short side. So there is nothing to worry, and also you can see that there is absolutely no volume today. So basically this means that it's a more of a consolidation phase, and maybe going forward a very good trade or very good levels to monitor would be how it reacts above 68, say for example. So I will put and try to see if it's able to take out 68, and then eventually we can talk about the next steps. So no matter what, I posted this video because someone asked me about their existing position. So the basic thing is, if you're going for a target, just do remember that there are people who are going to book
as and when they feel that they have made enough money. And always try to ascertain any breakout with volume, and also the ferocity of this breakout, मतलब कितनी ज़ोर धमाके से वो ब्रेकआउट हुआ है. जितने ज़ोर से होगी ब्रेकआउट उतने ही वो पावरफुल होगी, और उतने ही वो फेल होने के चांसेस उसके बहुत कम होते हैं. सो होप आई वॉज एबल टू explain how I trade breakouts, and how you can form a very basic you can stay away from very basic pitfalls and errors which a normal new traders do. And third of all is, many a times chart में आपको दिखती है, अगर आप इस chart में देखो तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी कैंडल आई, फिर छोटी छोटी, ये देखिए ये जो कैंडल था, दिस itself is a bearish candle, right? एक बहुत बड़ी एक ब्रेकआउट आई, और उसका नेक्स्ट कैंडल उसी के अंदर में जाके रेड में क्लोज देती है. सो इफ समवन वुड हैव शॉर्टेड हियर, सो दे वुड हैव बीन मेकिंग मनी, क्योंकि यहाँ पे ये जो मूव आई है, दैट वाज स्प्रेड अक्रॉस. सो वी आर लुकिंग ऑन अ 15-minute चार्ट, सो यू कैन अंडरस्टैंड देयर आर एटलीस्ट 10-15 कैंडल्स ओवर हियर. सो अगर आप जाके इसका 68 का आप CE बेस देते हो, सो जस्ट विथ टाइम डिके यू आर गोइंग टू मेक money and be in the positive zone, right? So always try to ascertain this, and this is going to help you in not getting involved in false breakouts and then carry your losses. No matter what, I think going forward, I have to look into the positions of BHEL. I don't know how it looks at the end of the day. So if the good thing would be, if the trend is getting weaker, just like trend is getting weaker in sale, and I mentioned that even during market hours, the 123 seems to be acting like a support. We have to see how it reacts in the next sessions. लेकिन वही है कि अगर ट्रेंड वीकेंड हो रही है, देन ओनली इट्स गुड न्यूज़. बट गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक 68 is going to act like a very tough resistance for BHEL to crack. And if it is able to crack 68 and give a closing above 68, then of course the earlier targets of 70 and 74 in short and medium term respectively are always there. Thanks a lot for listening. Hope this video is going to give you some idea of how I do trade breakouts. And yep, thank you.